Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड की टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे एंड टुडे वी विल बी कवरिंग द सब टॉपिक मैग्नेटिक मोनोपोल्स फ्रॉम यूनिट 3 origin of the universe. So let's start. जो बिग बैंग थ्योरी है वो प्रिडिक्ट करती है यूनिवर्स जहाँ पे एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, suggesting the presence of a significant number of magnetic monopoles जो कि प्रेजेंट होंगे इन द कोल्डेस्ट मोस्ट फ्रोजन पार्ट्स. जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं रिप्रेजेंटिंग मैग्नेट्स विद ओनली वन पोल. दे आर बिलीव्ड टू एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर्स. However, magnetic monopoles आज तक भी नहीं observed हुए. So if they exist at all, they are much rarer than the Big Bang theory predicts. तो आखिर सवाल ये है, why haven't magnetic monopoles been observed in the universe as predicted by the Big Bang theory? Inflation allow करती है for magnetic monopoles to exist, but only if they were produced before the period of inflation. इन्फ्लेशन के दौरान जो डेंसिटी ऑफ मोनोपोल्स है वो फिर ड्रॉप हो गई होगी एक्सपोनेंशियली, which might have led to their abundance dropping to undetectable levels. जो काफी crucial questions about the inflationary theory हैं and the creation of the universe वो remain हो रहे unanswered. What initiated the initial inflation? What existed before inflation? What was the cause triggering inflation? Why should we suppose that inflation was followed by the Big Bang and not a big bounce? जो इन्फ्लेशनरी पैराडाइम है उसने गेन की है वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस सिंस इट्स इंसेप्शन. हाउएवर न्यूमरस जो फिजिसिस्ट्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं और फिलोसोफर्स ऑफ साइंस हैं, उन्होंने क्रिटिसिज्म्स रेज की है, पॉइंटिंग आउट द अनटेस्टेबल प्रेडिक्शंस एंड अ लैक ऑफ सब्सटैंशियल एम्पिरिकल सपोर्ट. सो आज हम इस यूनिट का आखिरी टॉपिक भी कवर करेंगे विच इज द मल्टीवर्स थ्योरी. जो कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेशन थ्योरी उसने इंट्रोड्यूस किया एन आइडिया ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सेस विद आइसोलेटेड फिजिकल लॉज. in many inflationary models it's proposed that once inflation initiates वो कभी भी completely hot नहीं हो सकेगी. Instead वो seize होगी in certain areas giving rise to new universes. ये जो universe है वो often refer to की जाती है as pocket universes because they don't encompass the entirety of existence. हमारी जो current existence है it resides within one of these pocket universes. Moreover, despite the continual creation of pocket universes, there persists a volume of exotic repulsive gravity material that जो perpetually inflate हो सकती है, generating an infinite number of these pocket universes एक everlasting sequence में. जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द मल्टीवर्स वो सजेस्ट करता है कि और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कंटेनिंग बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड इमेंस नंबर ऑफ स्टार्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस द बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स वो शायद अकेले ना एग्जिस्ट कर रही हो. दे वहाँ पे पोटेंशियली एग्जिस्ट कर सकती हैं इंटायरली डिस्टिंक्ट यूनिवर्सेस जो कि फार हैं फ्रॉम आवर्स. ये कंसीवेबल है कि देयर माइट बी एन existing an infinite array of universes, each with its own distinct laws of physics, collection of stars and galaxies, and perhaps even their own unique intelligent civilizations. ये plausible है कि हमारी जो universe है it is merely one component of a much vaster and grander collection of the universes. एटर्नल इन्फ्लेशन के सिनेरियो में हर जो यूनिवर्स है वो इमर्ज होगी विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट लॉज ऑफ फिजिक्स, पार्टिकल्स, forces and fundamental constants. This is the end of unit 3 and that's gonna be all for today. Thank you.